Now moving to the third paragraph, see the major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances, and loud speech patterns. Noise coming from different modes of transport, that is, vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful to human communities. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. This has given rise to noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. Now see the meaning of difficult words. Major causes, बड़ी वजूहात, कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीरी मकामात, कंस्ट्रक्शन तामीरी साइट्स मकामात, केयरलेस बेपरवाही से इस्तेमाल, केयरलेस यूज़ बेपरवाही से इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बरकी आलात या बिजली से चलने वाली अशिया, लाउड स्पीच पैटर्न्स ज़ोरदार तरीके से बोलने के अंदाज़, ज़ोरदार तरीके से बोलने के अंदाज़, डिफरेंट मोड्स मुख्तलिफ ज़रियों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, कि दैट इज़ व्हीकल्स, एयरप्लेन्स हवाई जहाज़, ट्रेन्स रेलगाड़ियाँ, शिप्स बहरी जहाज़, प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल परेशान कुन, ह्यूमन कम्युनिटीज़ इंसानी आबादियाँ, विद द पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती हुई आबादी या आबादी में इजाफ़ा, एंड डेवलपमेंट और तरक्याती काम, इन अर्बन एरियाज़ शहरी इलाके, द vehicular traffic has also multiplied दुगना हो जाना, this has given rise बढ़ाना, noise pollution largely मजमूई तौर पर, in the form of unwarranted गैर ज़रूरी honking हारन बजाना by drivers, also the mushroom growth मशरूम बेतहाशा, ग्रोथ इजाफ़ा बढ़ना, ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ रिहायशी इलाके या कॉलोनियाँ, नियर एयरपोर्ट्स हवाई अड्डे, एंड रेलवे स्टेशन हैज़ एक्सपोज्ड दो चार कर देना, रेजिडेंट्स रिहायशियों को परमानेंट मुस्तकिल एंड अनअवॉइडेबल और नागज़ीर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का ज़रिया। द मेजर काजेज़ ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं ट्रैफिक ऑन रोड्स, सड़कों पर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स तामीरी मकामात, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बरकी आलात का बेपरवाही से इस्तेमाल, एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स और ज़ोरदार तरीके से बोलने के अंदाज़ हैं। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी के बड़े ज़रिए सड़कों पर ट्रैफिक, तामीरी मकामात, बिजली से चलने वाले आलात का बेपरवाही से इस्तेमाल और ज़ोरदार तरीके से बोलने के अंदाज़ हैं। नॉइस कमिंग फ्राम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदोरफ्त के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आता हुआ शोर, नॉइस कमिंग फ्राम से आता हुआ शोर, डिफरेंट मोड्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदोरफ्त के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आता हुआ शोर, दैट इज़ जो कि व्हीकल्स गाड़ियाँ, एयरप्लेन्स हवाई जहाज़, ट्रेन्स रेलगाड़ियाँ, शिप्स बहरी जहाज़, प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल इंतहाई परेशान कुन साबित होते हैं
فار ہیومن کمیونٹیز، انسانی آبادیوں کے لیے. ود دی پاپولیشن گروتھ، آبادی میں اضافے کے ساتھ، اینڈ ڈیولپمنٹ ان اربن ایریاز، اور شہری علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ، دا ویکولر ٹریفک ہیز آلسو ملٹیپلائڈ، گاڑیوں کی ٹریفک بھی دگنی ہو چکی ہے. دس ہیز گیون رائز، اس نے بڑھا دیا ہے ٹو نوائز پولوشن، شور کی آلودگی کو، لارجلی مجموعی طور پر ان دا فارم آف انوارنٹیڈ ہانکنگ بائی ڈرائیورز، ڈرائیوروں کی طرف سے غیر ضروری ہارن کے استعمال کی شکل میں. آلسو دا مشروم گروتھ آف ریزیڈینشیل کالونیز نیئر ایئرپورٹس اینڈ ریلوے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں کے قریب رہائشی کالونیوں کے بے تحاشا اضافے نے بھی ہیز ایکسپوزڈ ریزیڈنٹس، شہریوں کو دوچار کر دیا ہے، ٹو پرماننٹ اینڈ ان اوائڈیبل سورس آف نوائز پولوشن، شور کی آلودگی کے مستقل اور ناگزیر ذریعے میں. ریلوے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں کے قریب رہائشی کالونیوں کے بے تحاشا اضافے نے بھی وہاں کے شہریوں کو مستقل اور ناگزیر شور کی آلودگی کے ذریعے سے دوچار کر دیا ہے. Now girls, I hope so you have understood all the parts.